Hello student, in the last video we have discussed about the asexual reproduction. Now we discuss about vegetative reproduction or vegetative propagation in plant. Vegetative reproduction is one type of asexual reproduction or vegetative propagation in plant is one type of asexual reproduction. What is the definition of vegetative reproduction or vegetative propagation in plant? That is formation of new individuals from any vegetative part of the plant body is called as vegetative reproduction. Means new individual formation हुए काटो formation हुए ना from any vegetative parts of the plant body रो जे कौन सी गोटे vegetative part रू जदि new individual formation हुए से भली प्रक्रिया को हमें vegetative reproduction बोले कि कहू. Any part, what is any part? ना plant रो जे कौन सी part either leaf हो, root हो, stem हो, bulbil, corm, rhizome में सब जे कौन सी plant रो गोटे part रू new individual formation होबा process को हमें vegetative reproduction और vegetative propagation बोले कहू. The most common form of asexual reproduction in plants is called vegetative reproduction. Plant माने vegetative reproduction रे commonly साधारणतः reproduction करंती तेणु यह कुआ जाउछि the most common form of asexual reproduction in plants is called as vegetative reproduction or it is also called as vegetative propagation in plant. Then vegetative reproduction is divided into two types, that is natural vegetative reproduction and artificial vegetative reproduction. First of all, we discuss about what is natural vegetative reproduction. Natural vegetative reproduction. The types of natural vegetative reproduction. Natural vegetative reproduction is again divided into 11 types. That is type 1 leaf. Leaf माध्यमरे reproduction हुए. Bryophyllum, Amoropoi, Begonia leaf माध्यमरे reproduction करंती. Type 2 rhizome. Rhizome is underground stem. Gingiber, अदा, कुर्कुमा, हळदी rhizome द्वारा reproduction करथांती. Type 3 corm. Colocasia, saru, crocus corm माध्यमरे reproduction करथांती. Type 4 stem tuber or tuber. Solanum tuberosum आलू सोलानम ट्यूबेरोसम स्टेम ट्यूबर किंबा ट्यूबर द्वारा रिप्रोडक्शन करिथाय. टाइप 5 बल्ब्स ओलियम सेपा मीन्स अनियन पियाज ओलियम सेपा बल्ब द्वारा रिप्रोडक्शन करिथाय. टाइप 6 रनर इज आल्सो अंडरग्राउंड स्टेम. Cyanodon dactylon, that is दुबो घास Cyanodon dactylon रनर रो वेजिटेटिव पार्ट द्वारा रिप्रोडक्शन करिथांते. टाइप 7 स्टोलन इज आल्सो अंडरग्राउंड वीक स्टेम. कोलोकासिया सारू फ्रागारिया स्टोलन वेजिटेटिव पार्ट रू रिप्रोडक्शन करिथांते. टाइप 8 sucker is also subaerial stem, that is musa banana chrysanthemum sucker vegetative part ru reproduction करिथांती. Type 9 offset Eichhornia pistia also reproduced by the vegetative part of offset. Type 10 bulbils Agave americana or Agave glova reproduced by the vegetative part, that is called bulbils. Bulbils vegetative part ru Agave and glova reproduction करिथांती. Type 11 roots
इपोमिया बटाटस, स्वीट पोटाटो, ढालिया, आस्पारागस रूट माध्यम रिप्रोडक्शन करिथांती। तो एथिला आउटलाइन चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये चार्ट को तुम मान सब मन रखिबो को प्लांट रो पार्ट रो रिप्रोडक्शन करूची ए सब चार्ट लेखिकी मन रखिबो जोड़ा कि तुमरो 1 मार्किया क्वेश्चन प्रति वर्ष आस्थाउची। सपोज क्वेश्चन केमती आसीबो ना ब्रायोफाइलम इज रिप्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑप्शन थिबो लीफ, राइजोम, कॉर्म, स्टेम, ट्यूबर। तुम चूज करिवो लीफ। एपरि भाबरे 1 मार्किया क्वेश्चन ए चार्ट रो आसी थाए प्रति वर्ष। Vegetative reproduction or vegetative propagation by leaves. A green flattened lateral appendages of stem where photosynthesis occurs is called leaf. Means leaf, green flattened lateral appendages of stem ro green flattened lateral appendages जोठी photosynthesis हुए ताको आमे leaf बोली की कहू। Means green flattened lateral appendages of stem where photosynthesis occurs is called leaf. Adventitious buds arise from the adventitious bud arise from the leaf is called epiphyllous bud. Means epiphyllous bud, adventitious bud arise from the leaf. Leaf रो adventitious bud arise हुए ताको आमे कहबा epiphyllous bud बोली की कहबा बा adventitious bud मध्य को आ जाए। Epiphyllous bud arise from the marginal of the leaf and give out top of adventitious root. Means epiphyllous bud arise हुए कोट arise हुए ना from the marginal of the leaf and give out top of the adventitious root. Means epiphyllous bud ये देखो adventitious bud और epiphyllous bud ये adventitious bud और epiphyllous bud रो plantlet गुड़ा का धीरे धीरे ऊपर को development हुए। This one is top of adventitious root। तल को top of adventitious root develop हुए, ऊपर को leaf गुड़ा का grow हुए। Young plantlets are developed from the buds by utilizing food materials and water stored by leaf. Leaf रे water and food material थाए। A leaf रो food material and water को adventitious bud utilizing करिकी तल पार्ट top of root development करे, ऊपर रे leaf गुड़ा को development हुए और young plantlet development हुए। मैंने leaf रो फूड मटेरियल स्टोर फूड मटेरियल एंड वाटर को यूटिलाइज करके प्लांटलेट और यंग प्लांटलेट धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए लाइक दिस। व्हेन इट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट लीफ ईच प्लांटलेट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। मीन्स जेतेले यंग प्लांटलेट ग्रो हुए, ग्रो ही साला परे जेतेले लीफ पेरेंट लीफ टा सेपरेट ही साला परे ए यंग प्लांटलेट सेपरेट है कि न्यू प्लांट फॉर्मेशन करे बा न्यूली प्लांट डेवलपमेंट करे। एग्जांपल्स ब्रायोफाइलम पिनाटम that is Omeropoi, Adiantum quadratum, it is otherwise called as or commonly called as walking form, Begonia, elephant ear plant madhya कहबाकू, Colancoe, etc. reproduced by the process of vegetative propagation or reproduction by leaves. तो गोटे एग्जांपल लिया है that is it is Bryophyllum leaf. Bryophyllum leaf रे किभली भाव रे रिप्रोडक्शन होछि एडी तुमको चित्र माध्यम रे दर्शा जाय छै। ये होछि Bryophyllum leaf. Bryophyllum leaf तळे पड़ी साला परे वाटर एंड सॉइल रो संस्पर्श रे आसी एडवांटेजियस बर्ड फॉर्मेशन हुए। एडवांटेजियस बर्ड फॉर्मेशन हला परे एरियल पार्ट रे मींस अपर पार्ट रे शूट डेवलपमेंट हुए।
shoot, leaf, stem development. Shoot means leaf, stem, flower, buds etc. development हुए एवं तल पार्ट रे टॉप एडवेंटियस रूट डेवलपमेंट हुए जेते बेले यंग प्लांटलेट पेरेंट लीफ रु सेपरेट हुए सेते बेले यंग प्लांटलेट सेपरेट है कि न्यू प्लांट रे डेवलपमेंट हुए। तो दिस वन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन और रिप्रोडक्शन बाय लीफ माध्यम रे किपरि भाव रे प्लांट गुडाक रिप्रोडक्शन करूछंती। Rhizomes. What is rhizomes? The underground dorsiventral horizontally growing stem are called rhizomes. Means rhizome underground माटी तले रुहे, dorsiventrally means dorsal surface and ventral surface present रुहे, horizontally growing means horizontal देखि पारुछ, this is ginger are flat surface dorsiventrally and horizontally भाबरे ये ग्रो करछि like this rhizome is called the underground dorsiventral horizontally growing stem are called rhizomes. Means it is one type of underground stem. This like stem is called as rhizomes. Rhizome is fleshy due to storage of ample means plenty food material. Rhizome is fleshy means मांसाल राइजम गुड़ाक मांसाल रुहंती ड्यू टू स्टोरेज ऑफ आम्पुल फूड मीन्स प्रचुर परिमाण रे फूड गुड़ाक प्रेजेंट थाए सेति पई राइजम गुड़ाक फ्लेसी बा मांसाल रुहंती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आम्पुल फूड मटेरियल। दे हैव डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड। राइजम मानकर नोड एवं इंटरनोड अछि लाइक इट इज नोड मीन्स गंठी एंड नोड एंड इंटरनोड रो मझी पाट को आमे नोड रो मझी पाट को आमे इंटरनोड बोली की कहू। तो राइजम रे डिस्टिंक्ट अलग अलग नोड एवं इंटरनोड प्रेजेंट थाए। द स्केल लीव्स प्रेजेंट एट द नोड्स हैव ऑक्सिलरी बोर्ड। देख पार छटी स्केल लीव्स ऑक्सिलरी बोर्ड रे दिस इज स्केल लीव्स एटा ऑक्सिलरी बोर्ड रे स्केल लीव्स गुडा को प्रेजेंट रुहंती। The auxiliary boards develops into branches which lateral separate and to form new individual. Auxiliary board गुडा को branches रे डेवलपमेंट हुंती सेइडा परिशेष रे बा परे सेपरेट होई कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन करि थाए। एग्जांपल जिंजिबर ऑफिसिनाले इट इज जिंजर, कुरकुमा लंगा, टर्मरिक, मार्सेलिया, टीफा, मुसा are reproduced by the vegetative part that is rhizome vegetative part द्वारा जिंजिबर ऑफिसिनाले जिंजर, कुरकुमा लंगा, टर्मरिक, मार्सेलिया, टीफा, मुसा बनाना रिप्रोडक्शन करे। तो इट इज वन एग्जांपल ऑफ rhizome ऑफ जिंजर। ये जिंजर रो ये होची एरियल शूट, बोर्ड, स्केल लीव्स, नोड रो मझी पाट को हम इंटरनल बोली ना कहबा। तो तळे जो rhizode like structure that is called adventitious root a board ru auxiliary board ru scaly leaves development board ru new individual धीरे धीरे development हुए। Type 3 vegetative reproduction is corm. What is corm? The unbranched fleshy solid vertically growing herbaceous underground stem is called corm. Means unbranched ये branch हुए नहीं, fleshy मांसाल रुए एवं solid vertically growing herbaceous underground stem is called corm. Vertically means 90 डिग्री रे ग्रोइंग हुए। देखो वर्टिकल 90 डिग्री रे ये ग्रो होची
अंडरग्राउंड स्टेम माटी तले रुहे कॉर्म टा. So the definition of corm is the unbranched fleshy solid vertically growing herbaceous underground stem is called corm. Herbaceous means herbaceous. It is herbaceous. Herbaceous means herb like a herb. The shape of the corm is almost spherical or flattened from top to bottom due to excessive deposition of food material. Means corm, this one is corm, a corm top to bottom flattened ruhe due to excessive deposition of food material. It has large apical bud, corm ro large apical bed present ruhe. It bears adventitious roots or aerial shoots by consuming the old corm, and then new corm is formed at the base of the aerial shoot. Means it bears adventitious root or aerial shoot. Adventitious root means aerial shoot. This one is aerial shoot. Apical bud ru aerial shoot ta arise hoy, that is called apical shoot. Apical shoot develop हुए. So it bears adventitious root or aerial shoot by consuming the old corm, and then new corm is formed at the base of aerial shoot. Means old corm को consume करके new plant formation होए. old corm रे food material गुड़ा को रुहे, water food material रुहे. ए food material water को apical bud consume करी खाई कि ना एपिकल शूट बा न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन करे. एग्जांपल अमरफोफालस, दैट इज एलिफेंट फुट और जामिनकांड, क्रोकस, saffron, colocasia, saru, glandulus are reproduced by the vegetative part, that is called corm. So it is corm of erisma. erisma ro corm ro diagram दिया है. This is corm. एटा old corm apical bud. This is apical bud. old corm को consume करी ना apical shoot development हुए, apical shoot new individual formation हुए. It is colocasia, saru. Colocasia. This one is corm. Old corm is store food material, harmful food material, plenty of food material रुहे. तो so corm like spherical or flattened shape ruhe due to excessive deposition of food material. Excessive deposition of food material को तमरो apical bud consume करके ना aerial shoot development हुए. Type 4 vegetative reproduction is stem tuber or tuber. What is tuber? The fleshy, swollen, rounded underground stem is called stem tuber or tuber. Like this. This is stem tuber of potato. The fleshy, mangsala, swollen means fully ruhe, rounded, spherical, goal, underground माटी तले रुहे, stem is called as stem tuber or tuber. The definition of stem tuber of tuber is the fleshy, swollen, rounded underground stem is called stem tuber or tuber. Each tuber bears several eyes on its surface in small depression. Means प्रत्येक tuber small depression रे eye गुड़ा को present रुहे. देखो diagram रे सबू आई तो ट्यूबर सरफेस रे आई गुड़ा को प्रेजेंट रुहंती. कोडी प्रेजेंट रुहंती ना स्मॉल डिप्रेशन मींस जोड़ी टिके दबी जाइथिवो से स्मॉल डिप्रेशन रे आई गुड़ा को ट्यूबर रे प्रेजेंट रुहंती. ट्यूबर शो प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स. हाउएवर द इंटरनोड्स एंड नोड्स आर नॉट वेरी डिस्टिंक्ट ड्यू टू द ग्रेट स्वेलिंग. मींस
ट्यूबर एते मात्रा फुली जाई थाए जे तार नोड एवं इंटरनेड भल भाव देखी हुए ना माने बहुल भाव ट्यूबरटा स्वेलन कर थाए फुली थाए जा फल को नोड आ इंटरनोड डिस्टिंग करि परिबा नाही। इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द ट्यूबर शो प्रेजेंस ऑफ नोड्स व्हिच एट मैच्योरिटी चेंज इनटू आई। ट्यूबर अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रे नोड गुडा को देखिया को पाई परिबा बट एट मैच्योरिटी समय रे नोड गुडा को चेंज है कि आई रे डेवलपमेंट होंती माने मैच्योरिटी समय रे नोड्स गुडा को चेंज है कि आई रे डेवलपमेंट होंती। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द ईच आई डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स और शूट। ये आई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ईच आई सेंटर ऑफ द ईच आई दैट इज जर्मिनेटिंग बोर्ड ए जर्मिनेटिंग बोर्ड ता डेवलपमेंट है कि न्यू इंडिविजुअल रे डेवलपमेंट होंती। एग्जांपल सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो हेलियांथस ट्यूबरोसम आर्किटॉप is reproduced by the vegetative part that is stem tuber or tuber. It is tuber of potato तो depression small depression रे आई गुडा जर्मिनेटिंग बोर्ड गुडा जर्मिनेटिंग आई बोर्ड फॉर्मेशन हुए ए जर्मिनेटिंग आई सेंटर रे जो जर्मिनेटिंग आई बोर्ड हुए सेटा तमरो डेवलपमेंट है कि न्यू इंडिविजुअल रे डेवलपमेंट होंती। दिस इज वन आई स्मॉल डिप्रेशन रे जर्मिनेटिंग बोर्ड गुडा को डेवलपमेंट है कि से जर्मिनेटिंग बोर्ड गुडा को डेवलपमेंट है न्यू इंडिविजुअल रे परिणति होंती। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टाइप 5 bulbs. What is bulbs? The underground pyriform modified shoot having highly reduced disc shaped stem is called as bulb. Means underground माटी तले रुहे pyriform like this form is called as pyriform. It is if you are in onion, so the underground pyriform modified shoot having highly reduced disc shaped stem is called as bulb. It is bulb like this. It is called bulb. Several fleshy scale leaves growing from bulb enclosing fleshy leaves and terminal bud. Several fleshy scale leaves growing from bulbs रू several fleshy scale leaves गुड़ा को डेवलप हुए बा ग्रो हुए. दिस इज बल्ब. ए बल्ब रू सेवराल फ्लेसी स्केल लीव्स गुड़ा को डेवलपमेंट होती. The adventitious roots are produced from the lower side of the greatly reduced stem. Means greatly reduced stem. This is greatly reduced stem bulb. A greatly reduced stem bulb रू adventitious root गुड़ा को ता तोड़ रे डेवलपमेंट होती. This is adventitious roots. It is called adventitious root. ए बल्ब रू तल पार्ट रे एडवांटेजियस रूट्स गुड़ा को डेवलपमेंट होती. ऊपर पार्ट रे तुमरो फ्लेशी स्केल लीव्स गुड़ा को डेवलपमेंट हुए. द लीफ बेस बियर एक्सिलरी बड व्हिच आल्सो डेवलप इनटू डॉटर बल्ब. द लीफ बेस लीफ रो बेस रे एपिकल बड डेवलपमेंट हुए बा ऑक्सिलरी बड. द लीफ बेस बियर्स ऑक्सिलरी बड व्हिच आल्सो डेवलप इनटू डॉटर बल्ब. लीफ बेस गुड़ा को तुमरो ऑक्सिलरी बल्ब गुड़ा डेवलपमेंट होती. से ऑक्सिलरी बल्ब डॉटर बल्ब रे डेवलपमेंट होती. When the daughter bulb grow into a new individual, then तापरे daughter bulb गुड़ा को new individual बा new plantlet development करंती. तो example that is Oleum cepa onion, tulips बोली कहा होची ताको. Oleum sativum garlic, lily, coneflower, narcissus
नागिरिस बोली कहब ओलियम सेपा टुलिफा ओलियम साटिवम लिलीज नार्सिसस reproduced by the vegetative part that is called bulb vegetative part ru ओलियम सेपा टुलिफा ओलियम साटिवम इत्यादि रिप्रोडक्शन करती। इट इज बल्ब ऑफ अनियन रो बल्ब अनियन एपरि भाव में रिप्रोडक्शन करिथाय। हेलो स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप 6 vegetative reproduction or vegetative propagation, that is runner. What is runner? The slender subaerial weak stem which grow horizontally along the soil surface is called as runner. Runner is slender and subaerial weak stem which grow horizontally भाव grow होता है along with soil surface is called runner. It grow from basal axillary bud of short erect shoot and spread in different direction. Runner basal axillary bud of short erect shoot रू ग्रो होता है एवं different direction रे spread करता है विस्तारित होता है like this. Each runner is differentiated into many nodes and long thin internode. प्रत्येक रनर many nodes and long thin internode differentiated होता है. At each nodes it grow scaly leaves, auxiliary buds and adventitious roots. प्रत्येक नोड रो scaly leaves, auxiliary buds and adventitious roots रिलीज होता है बा बाहरी था. If the runner is caught If the runner is caught incidentally or accidentally, the caught person can grow independently. जदि रनर कौन से incidentally किंबा accidentally कटि जाए तो प्रत्येक पार्ट न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन हुए. सपोज दिस वन इज रनर, यदि incidentally किंबा accidentally कट हो जाए तो प्रत्येक कटिंग पार्ट बा कट पार्ट न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन हुए. Example Cynodon dactylon, that is दुब घास, धूपग्रास, oxalis, wooden sorrel कहा जाउछि ताको, स्ट्रॉबेरी, सेंटेला, ओसिटाटिका, ब्राह्मी एसबु रनर द्वारा रिप्रोडक्शन करती. सो अगेन Cynodon dactylon, दुब घास, oxalis, स्ट्रॉबेरी, सेंटेला, आसियाटिका रनर द्वारा रिप्रोडक्शन करिथाय. So it is runner of dubgrass. So this slender like structure is called as runner. This is node and node रो मझी पाटू का हमें internal body की कही थाउ. इट नोड रो जदि रनर टा accidentally किंबा incidentally यदि कट हो जाए, each cut part grow into a new individual. Next, sucker. What is sucker? The subaerial stem which develop from the nodes of horizontal or vertical branch of the main axis of main stem is called sucker. So, the subaerial stem which develop from the node of horizontal or vertical branch of main stem is called sucker. Means sucker is subaerial stem which develops from the nodes of horizontal or vertical branch of main stem. Main stem रो horizontally और vertically node रो development होता है. Sucker is stouter means hard and shorter than runner. Runner अपेक्षा sucker टा hard रुहे एवं shorter रुहे. It always grow horizontally below the soil. Soil तले horizontally भाବରେ like this, horizontally भाବରେ sucker टा grow हुए. It may also develop from the auxiliary bud. Auxiliary bud रो मध्य sucker development होता है.
adventitious roots develop from lower side of the node. Adventitious board lower side of the node ରୁ ମଧ୍ୟ develop ହୋଇଥାଏ. Sucker is otherwise called underground runner. जेहेतु सकटा अंडरग्राउंड रे प्रेजेंट अछि सेति आपको otherwise called as underground runner. Example chrysanthemum, rose, musa, pineapple sucker द्वारा reproduction करिथांती. So this diagram represent suckers of chrysanthemum. This is mother plant. This one is mother plant. Under the soil surface or below the soil surface, sucker is grow like horizontally and root are developed below the soil and aerial ray हमर shoot bahare. This is daughter plant and this one is called sucker. Like this, chrysanthemum reproduced by the vegetative propagation, that is vegetative part, that is sucker. Sucker द्वारा एपरि भाबरे chrysanthemum reproduction करिथाय. Next, stolon. What is stolon? The slender subaerial weak stem which grow from lower part of the main axis. Stolon is cylindrical or slender subaerial weak stem which grow from lower part of the main axis. Main axis ro lower part re ye grow होइथाय. Each stolon grow upward for some times and then bends downward to form arc or bow shape with the soil surface. Means stolon प्रथमे upward direction रे grow होइथाय, then downward direction, upward direction and downward direction, like a arc like structure. This is stolon. Stolon जो surface रे soil surface रे touch हुए सेठी तळको हमरो adventitious root formation हुए, upper भाग रे aerial shoot or daughter cell formation हुए. At the tip of where it touches the soil, it produces adventitious root below and terminal bud above. Means at the tip रे where it touches, जो tip टा soil रे touch हुए से touching part रो तଳ को हमर adventitious root development हुए and ऊपर रे leaf development हुए और leaf and root development हेसाला परे daughter cell formation हुए. Like runner, stolon also functions as vegetative propagation. Runner भलिया stolon मध्य vegetative propagation करिकी reproduction करिथाय. Example jasmine, colocasia means saru, fragaria, vallisneria, dracaena main reproduced by the vegetative part, that is stolon. Stolon माध्यम रे jasmine, colocasia means saru, fragaria, vallisneria, dracaena main reproduction करिथांती. So this diagram represents stolon of strawberry. Strawberry diagram जो चेड़ा होची तमरो parent strawberry plant. The strawberry plant रो this is stolon. Stolon प्रथमे upward direction रे grow हुए, then downward रे grow हुए. तो like this figure is called as like arc or bow shape. Then when the stolon touches to the soil at the point where the stolon touches at the point of soil, that is this point, root are arise below the soil and above the soil shoot is formed. Like this, jasmine, colocasia, fragaria, vallisneria, dracaena main reproduce by the vegetative part, that is stolon.